Morning student. Today we will start a new chapter of English literature subject which is name is Lazy Jack. The chapter number is third. So this chapter is based on Lazy Jack and his mother. So let us start. Here the summary of this poem is that a poor lazy boy named Jack is living with his poor mother, hard-working mother. So Jack lived with his mother in a little hut. They were very poor. Jack's mother did some stitching. Stitching means spinning for her neighbors, but they too were poor. They did not pay her much. Jack did nothing at all. All summer he sat outside under trees, and all winter he sat by fireside. Everyone called him Lazy Jack. Then one day Jack's mother said, "Jack, you must go out and do some work. If you do not, I shall not give you any food. I will turn you out of the house." So that Jack sat up the street. He thought, "This will be bad. I have to eat. I will go out and work." A farmer living nearby gave Jack some work on his farm. At the end of the day he paid him a penny. Jack was happy. No one had even given him any money, and he kept in his hand. But while he's working, crossing a brook, plonk, it fell out of his hand and into the water. What the meaning of brook is that a small stream. A plonk, it means that a sound of something falling in a water. A small of something, which is something is that a person or someone is falling into the water and out of his hand and into the water. So his mother was really cross. It means angry. In this story, the meaning of cross is angry, not cross the road. You should have kept in your pocket. So in these two paragraphs talk about this story is that the poor lazy boy, which his name is Jack, living with his poor hard-working mother. Jack's mother tells him that does not starting pitching around the house, he will kick him out. This motivates Jack to go for work. Which person lazy is that? First, for a neighboring farmer who pays him a penny. Penny, it means that a coin for money. And Jack loses his penny on his way home. On his mother scold him, saying his mother is scold. It means cross. It another name of cross is scold. And scold him, saying you should have to put in your pocket. Jack as though he will do so next time, and he work for a cow keeper. So in Hindi this chapter is where जैक अपनी माँ के साथ एक छोटी झोपड़ी में रहता था जो कि बहुत ही गरीब था. उसकी माँ एक सिलाई करती थी जो कि अपने पड़ोसी की नेबरों के कपड़ों को लेके उसे सिलाई बुनाई करती थी. वो बहुत ही पुअर थे दोनों. दे डिड नॉट पे हर मच. जो इतना पे नहीं कर सकते थे फिर भी उनका खर्चा निकल जाता था. और उनका एक बेटा जैक नाम, वो बहुत ही लेज़ी था. पूरे दिन कोई काम नहीं करता था, कोई वर्क नहीं करता था. समर सीजन्स पे पेड़ों के नीचे बैठा रहता था और सर्दियों में फायर साइड आग जला के, जो कहते नहीं गर्मियों में आग के पास बैठना, आग जला के, ठीक है, फॉर गिविंग सम हीट टू द पर्सन. एवरीवन कॉल्ड हिम लेजी. हर कोई उसको लेजी जैक के नाम से जानता था. और उसको लेजी जैक के नाम से पुकारते थे. देन वन शैल नॉट गिव एनी फूड एंड रिटर्न ऑफ योर हाउस. एक दिन उसकी माँ ने उससे कहा कि जैक यू मस्ट गो आउट सम वर्क. तुम्हें बाहर जाना चाहिए कुछ काम करने, वरना मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी. आई विल टर्न आउट ऑफ योर हाउस. मैं तुम्हें अपने घर से बाहर निकाल दूंगी, मैं अपने वापस नहीं आने दूंगी. और दैट जैसे बिकॉज जैसे एक माँ अपने बच्चे से कहती है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही लेजी था. जैक सटा में स्ट्रेट वो सीधे खड़ा हो गया. उसने सोचा अगर मैं कुछ नहीं करूँगा ये बहुत ही बुरा है मेरे लिए. आई हैव टू, मुझे कुछ खाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, मुझे बाहर जाके कुछ काम करना पड़ेगा. फार्मर लिविंग नियर बाय जैक. और उसी घर के बगल में एक फार्मर रहता था. जैक लिविंग नियर गेव सम वर्क. तो उसने सोचा उस फार्म में जाके कुछ काम करेगा. उस फार्मर ने उसे कुछ काम दिया. एट द एंड दे पेड हिम पेनी. और उसने कुछ पैनी दिए. जैक वॉज वेरी, बहुत खुश हो गया था. नो वन हैव गिव हिम एनी मनी. किसी ने उसको कोई भी पैसे नहीं दिए थे. एंड ही केप्ट इन हिज हैंड. उसके हाथ में पैसा था. वैसे जैसे इस ब्रिज से जब वो क्रॉस करने लगा तो उसने अपने पॉकेट में रखने की बजाय वो किसी चीज़ से, कहते नहीं है साउंड ऑफ समथिंग फॉलिंग, प्लॉन्क हो गया अचानक से. उसके हाथ से जो पैनी थी वो गिर गई. ठीक है, जो सिक्का था ये, वो क्या था, वो ब्रिज में पानी में गिर गया जब वो क्रॉस कर रहा था.
Now the next paragraph is that the next day the cowherd who had hired him had a jug of milk, and Jack was wearing a coat and that had a big pocket and kept the jug of milk in his pocket, of course, and it kept spilling it all the way home. By the time he reached home, and the jug was empty. "You silly boy," said his mother, "you should have carried it carefully on your head." So what his mother says that you should have put in your pocket as Jack as you hurry will do so next time, and he then worked for a cow keeper. जब उसने सोचा कि दोबारा मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा, इस चीज़ को याद रखूँगा कि जब भी मुझे पैसे मिलेंगे तो मैं अपने पॉकेट में रखूँगा. जैक पुट इन हिज पॉकेट एंड स्पिल ऑन हिज वे एंड ही देन वर्क फॉर काउ. तो वो काउ कीपर के यहाँ काम करने लगा, जहाँ पे काउ होती हैं वहाँ पे. गाव हैंड हिम की जग ऑफ मिल्क. तो उसने क्या दिया, एक जग मिल्क दिया, ठीक है, एक जग मिल्क दिया. And who gives a jar of milk for his work, and Jack put in the pocket and sprint away home. His mother said, "You should have carried into your head." Jack then works to another farmer who gives him cream cheese in his work and is put into the head, and who gives him a cream cheese for his work. He put into head his spoil the cheese that all cheese are spoiled into his face and spoil the cheese. And his mother says, "You should have carried it very carefully on your hand, so why you should take in on your head." Jack works for a baker who gave him a cat for his work. So, "Oh Jack, what I am going to do with you? You should have to carry it in your hands." उसने क्या किया, उसने एक बेकरी शॉप में काम किया एंड रीच जग ऑफ एम्प्टी. उसने देखा कि जब पॉकेट एंड कीप स्पेलिंग इन द वे होम बाय द रीच होम. जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा जग क्या था, खाली था. "You silly boy." उसकी माँ ने उससे कहा, "यू शुड हैव कैरीड अ केयरफुली." और तुम्हें ये हेड पे ले जाने की क्या ज़रूरत थी. एंड केयरफुली ऑन योर हेड, यू शुड हैव कैरीड इट केयरफुली ऑन. अगर तुमने अपने हेड में तो बहुत ही अच्छे से उठाना चाहिए था. देन यू केम मॉर्निंग एंड द फर्स्ट जॉब है. जब वो दूसरी सुबह जैक काम किया, दिस टाइम फार्मर वर्क वही गेव हिम सम क्रीम चीज़. तो उसने क्या कुछ क्रीम दिया, चीज़ दिया, ठीक है, क्रीम चीज़ ही दिया उसको काम के लिए. जैसे ही पुट ऑन इट, उसने क्या किया, अपने हेड पे रख लिया था. इट गॉट मिक्सड अप विद हिज फार्मर हेयर. तो उसमें क्या था, वो मिक्सड हो चुका था, उसके जो हेड था वो मिक्स हो चुका था. एंड इट मेल्टेड रैन डाउन हिज चीक्स. और आप देख ही रहे हैं कि जितने भी वो धूप की वजह से वो मेल्ट होता गया उसके चीक्स पे, ये सारे मेल्टेड आइसक्रीम गिरने लगी. एंड हिज मदर सेड, "ओ जैक, व्हाट आई एम गोइंग टू डू विद यू." मैं तुम्हारे साथ क्या ऐसे करूँ, यू शुड हैव कैरीड इन योर हैंड. तुम्हें अपने हाथों में ले जाना चाहिए था. And his mother said, "You should have carried on it is your head." Jack and the works in the farmer who gives the ice cream cheese in his work. He puts in the heads and we just spoil these. And his mother said, "You should have carried it carefully on your hand." Jack works for the baker and gives a cat for his work. Jack carries a cat on his hand but he scratches. So Jack worked for a baker. उसने बेकर में काम करना शुरू किया. Baker did not get much money. बहुत ज़्यादा पैसे नहीं देता था for a and baked and so he had maybe knew Jack was not too clever, क्योंकि बहुत ज़्यादा clever नहीं था. Anyway he gave Jack a large cat. उसने एक large cat दिया Jack को. Jack remembered his mother word. Jack ने अपनी माँ की बात को याद रखा and he carried face off. तो उसने क्या किया, अपने हाथों में पकड़ के रखा था. and he scratched Jack his hand and ran off. और उसने उसके Jack है उसके हैंड पे और उसके फेस पे स्क्रैचेस किया और वो वहाँ से भाग गई. कौन, कैट. And face and ran off, भाग गए. Jack, how is going to teach how to do things the right way, said his mother. How I am going to teach you, मैं तुम्हें किस तरह से समझाऊँ. To how to think, किस तरह से सही चीज़ों को की जाती है. उसकी माँ ने से, "You should have to try to string around the cat neck and brought at home." तुम उसे नेक पे लेके जा सकते थे, उसे घर ला सकते थे. It could have kept on a rat again. Yes mother, said Jack. उसने कहा, "Okay माँ." ठीक है, यस रिमेंबर. तो उस चीज़ ने कहा कि ठीक है मैं अगली बार से मैं ऐसा नहीं करूँ, इस चीज़ को याद रखूँ. मतलब वो जैसा उसकी माँ कहती थी वो अपना खुद का दिमाग यूज़ नहीं करता किन चीज़ों के साथ हमें किस तरह से वर्क करना चाहिए. वो कहते नहीं, हर एक प्रोसेस, हर वर्क का एक प्रोसेस अलग अलग होता है. हर एक चीज़ हम नेक पे अगर रखनी तो हर चीज़ नेक पे नहीं रख सकते. हर चीज़ हेड पे रखनी तो हम हर चीज़ हेड पे तो नहीं रख सकते. कोई चीज़ हाथ में ले जाने वाली होती तो हम उसे हेड पे नहीं रख सकते. ठीक है. Then Jack got some work at the butcher shop and the butcher gave him a big piece of it and tied a strong one. Butcher shop, butcher वो होता है person who sells, जो मीट बेचते हैं, ठीक है, नॉन वेज. Jack works for another cattle keeper. Donkey meat work. Well, Jack speaks of his meat along on face. His mother tells him, "You should have to carry it on your shoulder." Piece of it. Jack drags to piece of meat after allowing his mother tell him, "You should have carried on your shoulder."
Jack Buck's another cattle keeper gave a donkey for his work. Jack Buck carrying on a donkey on his shoulder. He deep went in his work. Beautiful girl. This is deep and beautiful girl. And this story is based on Jack was very cattle keeper who gives us donkey for his work, and Jack walks home carrying his donkey on his shoulder. A deep and beautiful girl. And beautiful girl, the daughter of a rich man, noticed him. She had never loved in her life, and it was only when she did be able to speak at the sight of the Jack and his donkey. She laughed so hard, and she immediately able to hear and speak. This girl father so happy that he marries to her lazy Jack and become very rich. Mother was happy, and Jack his wife until her death. I remember hearing this the tale. Something is elementary school, and I have begun rest of the classes laughed so hard, and I love this is story, and I recommended it elementary schools. I can't find a problem with this story. This is very interesting story about this chapter, which is based on a lazy person, Jack, to always. So the moral of this story: work is life, and life is work. Without work is never nothing. You can do anything. Work is important, very important for our life, which is based on for whole life to good and pretty beautiful our life. And this story is based very beautiful story, so you understand this story and you have to watch this story. And thank you.